हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45 लेरिया कंपनी। पढ़ते हमसे क्या पूछा गया है। डिस्कस विद रेफरेंस टू IFRS स्टैंडर्ड्स whether the directors can classify the stadium as held for sale at 31st of October 15. Leria company's accounting treatment of crowd barrier improvements at 31st of October 15. The principles of the accounting treatment for sale and leaseback of the stadium at 30th of November 2016. Okay, let's check. तो ये बाकी सब तो क्या है, टेलीविजन प्रोग्राम्स राइट्स एंड प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो मुझे लगता है ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसी के ऊपर होगा। सो लेट्स ट्राई। Leria is an internationally successful football club. Okay, Leria company is preparing the financial statements for the year ended 31st of October 15, but is currently facing liquidity problems. ठीक है। Stadium sale and leaseback and improvements. Leria company has entered into a contract regarding its stadium whereby it will sell the stadium on 30th of November 16 and immediately lease it back. The directors of Leria company wish to classify the stadium as non-current asset held for sale in the financial statements for the year ended 31st of October 15. यहाँ तक ठीक है। As they believe that the sale is highly probable at that date. तो हमारी जो सेल है at that date is highly probable. The sale contract requires disposal of the stadium for its fair value, market value of 30 million for Leria company to lease it back 10 years. Present value lease. अच्छा, तो ये सब बाकी सब तो लीज के ऊपर है। तो मुझे पहले ही कुछ गलतियां दिखी, तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर बोल देता हूँ। According to IFRS 5, according to IFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operations. पहली बात तो there are certain criteria that it has to be fulfilled before the non-current asset is classified as held for sale. The criteria is the sale should be highly probable. There should be an active effort that have been put into to locate a buyer. The management is committed on the sale, committed to like sell the product. um, एक और है, और दो है एक्चुअली। द मैनेजमेंट इज कमिटेड टू सेल द प्रोडक्ट, देन सी मेजर तो यहाँ पे जो अभी मुझे याद आ रहा है, मैं वही पहले बोल देता हूँ कि एज एट 30th of November 16 हम लोग बेचने वाले हैं। और जो सेल है दैट शुड टेक प्लेस बिफोर द 12 months पीरियड। सो यहाँ पर हम लोग 31st of October 15 को दिखा रहे हैं, और हम लोग बेचने वाले 30th of November 16 में, विच इज आफ्टर 13 months। सो इसलिए इसको नहीं दिखाएंगे। नाउ आई रिमेंबर दीज फोर क्राइटेरियाज, विच इज पहले बात तो द सेल इज हाईली प्रोबेबल, एक्टिव efforts have been put in to locate the buyer, the sale, हाँ, the sale amount is a reliable estimate, that is it is not overpriced। ये मुझे पॉइंट फिर पहले याद नहीं आ रहा था। देन 12 months के अंदर होना चाहिए। द मैनेजमेंट is committed on selling the product and a significant reversal will not take place। तो ये पांच सबसे पहले हम पॉइंट्स बता देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि हम लोग 31st of October 15 पे बैठ के बोल रहे हैं कि हम लोग 13 महीने बाद बेचेंगे, इसलिए इस चीज को एज हेल्ड फॉर सेल नहीं बताना चाहिए। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि अभी टॉपिक निकल ही गया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ना एसिड हेल्ड फॉर सेल के ना वो निकाल ही लेता हूँ आंसर, बिकॉज एक्चुअली उसमें 6-7 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट ऐसा था जो मेरे माइंड में आया एंड आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट एंड आई अगेन फॉरगॉट। तो ये 5 पॉइंट्स के अलावा भी और दो पॉइंट्स है विच वी शुड नो। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में होगा। आई थिंक इट्स इन द लाइक फिफ्थ चैप्टर के सबसे एंडिंग में है वो चीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बाद आता है। हाँ, ये रहा। तो ये रहे वो 7 पॉइंट्स है वो। प्रेजेंट कंडीशन, मेरा वो प्रेजेंट कंडीशन मेरे माइंड में आया एंड आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट जस्ट टू सेकंड्स लेटर। द आइटम इज अवेलेबल फॉर सेल एट इट्स इमीडिएट स्टेट इन द प्रेजेंट कंडीशन इटसेल्फ। और हमने मैनेजमेंट कमिटेड बोला, सेल इज हाईली प्रोबेबल बोला, एक्टिव लोकेशन बोला। हाँ, द आइटम इज एक्टिवली मार्केटेड हमने नहीं बोला, तो ये हम 2 पॉइंट्स भूल गए थे। आइटम इज एक्टिवली मार्केटेड
at a reasonable price. Unlikely the plan will change. बाकी के 5 पॉइंट्स हमने बोल दिए थे. So that's how our first part of the answer ends. ठीक है. अभी नेक्स्ट पे जाते हैं. लेरिया कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द क्राउड बैरियर इंप्रूवमेंट्स एट 31st of October 15, मतलब सेम ईयर एंड पे है. यहाँ तो पढ़ा था ना. हाँ. द सेल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स disposal of the stadium for its fair value, market value of 30 million, and for Leria Company to lease it back over 10 years. The present value of the lease payments at the market rates on 30th of November 16 is 26 million. The market value of the stadium of this type has not changed in several years and unlikely to change in the future. The stadium is depreciated by 5% using the RBM, which is reducing balance method. हाँ, शायद ये है. In the year to 31st of October 16, it is anticipated that 2 million will be spent to improve the crowd barriers in the stadium. There is no legal requirement to improve the crowd barriers. Leria company has incorrectly treated this amount as reduction in the assets carrying amount at 31st of October 15, and the corresponding debit has been made to profit or loss. At 31st of October 15, the carrying amount of the stadium after depreciation and reduction of the crowd barrier improvements is 18 million. तो सबसे पहली बात तो, अगर ये 2 मिलियन हमें कोई इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं हम स्टेडियम के अंदर, तो उसका वैल्यू बढ़ना चाहिए. हमने क्या किया, हमने उसी को माइनस कर दिया है एसेट में से, विच इज ऑल्सो रॉन्ग ट्रीटमेंट. पीएनएल डेबिट किया है, दैट्स ओके, बट आई थिंक हमें एसेट के वैल्यू में उसको ऐड बैक करना चाहिए था, ऐसा ऐसा मुझे लगता है. बट वी विल चेक द आंसर अगेन. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द आंसर. लेट्स गो आगे. The principles of accounting treatment for sale and leaseback of the stadium at 30th of November 16. During a sale and leaseback transaction, first of all, what we see is whether the whether the particular transaction qualifies for a sale or not under IS 15, revenue from contracts with customers. उसके बाद, because or for it to qualify as a sale, there should be a transfer of control that takes place from the buyer to the seller. ठीक है. तो सबसे पहले अपन वो देखेंगे वेदर द ट्रांसफर क्वालिफाइज फॉर अ सेल और नॉट. तो पहले अपन वो देख लेते हैं. ये तो पूरा क्या बोलते हैं, was for improvements. This what was for IFRS 5. तो मुझे कहीं ना कहीं इधर से पढ़ना है. हाँ. The sale contract requires disposal of stadium for its fair value, which is market value 50 million, and for Leria to lease it back over 10 years. The present value of the lease payments at market rates is 30 on 30th of November 16 will be 26 million. The market value of the stadium for this type has not changed for several years. Unlike in the future, the stadium is depreciated. Okay. तो हमको ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि that the control has been passed or not. तो ये एक normal transaction है, so it should be treated as a sale only. So when it is treated as a sale, what we do is the lessor de-recognizes the asset from its own books, then recognizes an ROU based on the proportion of the carrying amount of the previous asset. तो हमें वो फॉर्मूला लगाना है, which is ROU is equal to lease liability upon sale proceeds into the carrying amount of the asset. ये लगाने के बाद हमको एक ROU का फिगर मिलेगा, और वो ROU का फिगर हमें वहां पे रिकॉग्नाइज करना है. डोंट वरी, अपन सम करेंगे तो पता चल जाएगा. फिर हमें लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू मेक इन द फ्यूचर. अगर हम लोग वो लीज लायबिलिटी जो है प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे अबाउट ऑल द लीज पेमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर. ठीक है. उसके बाद लेट्स अज्यूम, पहले एक काम करो, मैं लीज लेटर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम लोग 5 साल के अंदर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख पे करने वाले हैं एवरी ईयर. तो हम लोग ना उस चीज को डिस्काउंट करेंगे टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू. कोई ना कोई एक वैल्यू हमें दी गई होगी, उस वैल्यू पे हम उस चीज को लेके आएंगे. तो एक्चुअली 5 लाख का पेमेंट करना है, बट लेट्स से कि प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के बाद उसका पेमेंट सिर्फ 3.7 लाख या ऐसा हो गया. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके उसको ऐड बैक करते रहना है. ऐसा करना है. मैंने 2 बार इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इट्स बेटर फॉर द सोल्यूशन एंड द सम. ठीक है.
देन जो ROU एसेट है इट विल बी डेप्रिशिएटेड like normal only, like a particular asset only, because अभी यहाँ पे देखेंगे तो it is leased over 10 years. We see it is leased over 10 years, तो उसको 10 years के अंदर आपको अपने को डेप्रिशिएट करते रहे. ठीक है. सो हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट है, ये थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट रहता है. इसमें कैसा रहता है कि सपोज करते हैं कि हमने वी सोल्ड दैट एसेट फॉर अ हायर अमाउंट देन व्हाट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज, तो हम लोग इस चीज को दिखाएंगे एज एडिशनल फाइनेंसिंग. लेकिन अगर वी हैव गॉट अ लेसर अमाउंट फॉर द एसेट देन व्हाट इज एट द फेयर वैल्यू, तो हम लोग उस चीज को दिखाएंगे एज प्री पेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी. लाइक इन दिस केस फॉर एग्जांपल, इफ यू सी द सेल कॉन्ट्रैक्ट, द डिस्पोजल ऑफ द स्टेडियम फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 30 million फॉर लेरिया कंपनी एंड लीज इट बैक ओवर 10 years. ठीक है. अभी अगर यहाँ पर ऐसा दिया होता कि द फेयर वैल्यू ऑफ द, कि अभी यहाँ पर तो हमने फेयर वैल्यू 30 million पे ही उसको सेल किया है, लेकिन अगर ऐसा दिया होता कि हमने उसको डिस्पोज किया है 30 million पे और उसका फेयर वैल्यू है 32 million या 26 million, तो ये दोनों ट्रीटमेंट्स अलग अलग आते हैं कि एक में प्री पेमेंट बताना है, दूसरे में एडिशनल फाइनेंसिंग करके बताना है, ऐसा. नाउ इफ वी सी द वी नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स इज 26 million, उन्होंने हमको सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है. ठीक है. यहाँ पर हम हमारे पास डिस्पोजल के सेल प्रोसीड्स भी हैं. अब क्या हमें यहाँ पे एसेट की वैल्यू मिल जाएगी, हमें वो चेक करना है. इफ वी गेट द एसेट्स वैल्यू ना, देन वी कैन, देन वी हैव टू सॉल्व द सम आल्सो. हाँ, ये देखो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द स्टेडियम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड डिडक्शन ऑफ द क्राउड बैरियर इंप्रूवमेंट्स इज 18 million. मैंने तो सा रब कर देता हूँ, थोड़ा शैबी हो गया ना. तो ये पॉइंट कैरिंग अमाउंट ऑफ द स्टेडियम हमें मिल गया 18 million. तो हाउ विल वी अकाउंट फॉर दिस इज, हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ROU is equal to lease liability upon sale proceeds into carrying amount of the asset. अगर नहीं समझ में आया तो गो बैक इन द वीडियो एंड सी. जब मैं वो पॉइंट्स बता रहा था कि लेसर अपने बुक्स में क्या शो करता है, तो मैंने बोला था ROU एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रपोर्शन ऑफ द कैरिंग अमाउंट, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. तो अभी लीज लायबिलिटी हम हमारी कितनी है, हमारी लीज लायबिलिटी 26 million, हमारे सेल प्रोसीड्स है 30 million, तो 26 डिवाइड बाय 30. ठीक है. एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट विच इज 18 million, सो आंसर इज 15.6. सो 15.6 million का जो है हमारा रिकॉग्नाइज होगा ROU. अभी क्या करेंगे, हम लोग हमारी जर्नल एंट्री पास करेंगे. नाउ वी हैव टू बाय हार्ट बोल लो या लॉजिकली सोच लो कि जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, मैंने ऐसे ऐसे बना देता हूँ, डेबिट क्रेडिट, मैं ऐसे बता देता हूँ. ठीक है ना. अभी लॉजिकली सोचते हैं कि अभी मैं अपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज करूंगा मेरे स्टेडियम, तो मेरा स्टेडियम होगा क्रेडिट, क्योंकि पहले मेरे एसेट साइड में था स्टेडियम, अब वो मेरे क्रेडिट साइड में चला गया, तो मैंने स्टेडियम को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, उसका वैल्यू था 18 million का. अब मेरी और कोई चीज डेबिट भी की थी मैंने, वो थी ROU, अब मैंने डेबिट किया है जिसका में मुझे अमाउंट मिला है 15.6. इसको भी मैं थोड़ा सा ना अलग ही लिखने का ट्राई करता हूँ. ठीक है. तो ROU डेबिट, स्टेडियम क्रेडिट. फिर मुझे कुछ ना कुछ सेल प्रोसीड्स मिले हैं, मतलब मुझे कुछ ना कुछ कैश मिला है, सो कैश अकाउंट डेबिट. बीच की लाइन में जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि मुझे पता नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कहाँ पर आएगा, इसलिए मैं बीच की लाइन छोड़ रहा हूँ. कैश है 30 million का, ये भी हो गया. इसके बाद लीज लायबिलिटी मुझे शो करनी है, सो लीज लायबिलिटी
ने शो कर ली कितनी की, 26 मिलियन की। अब मुझे देखना है मेरी बैलेंसिंग फिगर, तो 26 + 18 44, एंड यहाँ पर आता है मुझे 45.6। तो मेरा जो प्रॉफिट है मेरा वो इस साइड में आएगा, विच इज 1.6 प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट हुआ है इस केस में। कई बार मुझे लॉस भी हो सकता है, दैट इज सब्जेक्टिव। एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने बराबर से, क्योंकि ना मैंने कैलसी पे किया नहीं, मैंने अपने माइंड में किया था ना। हाँ हो गया, देखो 45.6 45, तो ये मेरी जर्नल एंट्री बनती है। सो ये हमें एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया। हाँ, नाउ दिस प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बस उतना ही है। दिस इज हाउ वी ट्रीट फॉर लीज एंड लीज बैक। ये तो काफी सिंपल समझा। यहाँ पे इन्होंने फेयर वैल्यू के साथ साथ ना वो दिया नहीं था कि फेयर वैल्यू अलग है और हमने बेचा किसी और अमाउंट पे है। यहाँ पर तो उन्होंने बोला कि भाई द द डिस्पोजल ऑफ द स्टेडियम फॉर इट्स फेयर वैल्यू 30 मिलियन। डिस्पोजल हुआ स्टेडियम का एट द फेयर वैल्यू ओनली, एट द बेसिक फेयर वैल्यू ओनली। वरना कुछ सम्स ऐसे भी यहाँ पर ना चेंज है। हैंड फूड नहीं, हैंड फूड नहीं, 45 करो ना, मैं सॉरी, लेरिया। अभी पैसा सबसे पहले देख लेते हैं हेल्ड फॉर सेल का। IFRS 15 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन रिक्वायर्स अ नॉन करंट एसेट टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इफ इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड primarily, principally through the sale transaction rather than through its continuing use. It must be available for immediate sale and in its present condition, and its sale must be highly probable within 12 months of classification as held for sale. The standard only foresees an exemption to this rule if the sale is delayed by events of or circumstances which are beyond the entity's control, which are unlikely to be the case in this instance. Leria company has entered into the firm's sales commitment, but the sale will occur after 12-month threshold. Therefore, the stadium cannot be classified as held for sale. तो ये अपने को पता चल गया। ठीक है, लेट्स गो। अभी हाँ, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस बैरियर इम्प्रूवमेंट्स, तो एक बार चेक कर लेते हैं। The 2 million is to be spent on crowd barrier improvements to the stadium should not be treated as a reduction in the assets carrying amount at 31st of October 15। ये अपने को पता था। लेकिन IAS 37 provision contingent liabilities and contingent assets states that a provision can only be recognized where there is present obligation that is legal or constructive as a result of past event. There is no present obligation because Leria company may decide not to carry out improvements. Therefore, 2 million should be added back to the carrying amount of the asset and corresponding credit entry made to the प्रॉफिट और लॉस। तो ये अपने परफेक्ट बोला है, आई हैड नो आइडिया। अच्छा, वैसे 37 मिली ऐसा क्यों बोला है यहाँ पे IAS 37 के बारे में, लॉस? शायद इस लाइन की वजह से कि देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू इम्प्रूव द क्राउड बैरियर, शायद इस लाइन की वजह से दे हैव एडेड IAS 37 ऑल्सो, बट आई डोंट थिंक ये डालने की जरूरत थी। बाकी ये तो अपने को पता था, वी वर नॉट सो श्योर अबाउट दिस बट वी गॉट इट। ठीक है ना। When provisions are recognized, they should be presented as a liability on the statement of financial position. Liabilities and assets should not be offset except under specific circumstances. हाँ ओके ठीक है, नो इश्यूज। अभी सेल एंड लीज बैक। A sale and leaseback transaction occurs when an entity transfers an asset to another entity and leases that asset back from the buyer or seller। ये एक्चुअली ना मैंने एक पॉइंट नोटिस किया है कि here and even here I jump directly to the answer, main crunch of the answer। मैंने एक्चुअली IFRS 5 और IFRS and sale and lease back in IFRS 16 एक्सप्लेन नहीं किया। I should have explained कि IFRS 5 non-current assets held for sale and discontinued operation requires non-current asset to be classified as held for sale if if the carrying amount of the asset can be primarily sorry principally be retained through the sale of the transaction। ये मुझे बोलना चाहिए था। एंड यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए था कि a sale and leaseback transaction occurs when an entity transfers the asset transfers an asset to another entity and leases the asset back from the buyer or lessor। मैं ये जानबूझ के एक दो बार इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरा भी बायर्ड हो जाए, क्योंकि मेरी भी एग्जाम है, राइट, इसीलिए।
The accounting treatment depends on whether a sale has occurred. Under IFRS 16, an entity must apply IFRS 15 revenue from contracts with customers requirements to determine when a performance obligation is satisfied. Nice one. In this case, it seems that the sale will occur on 30th of November 16 because of the binding sale commitment. तो हमको भी 30th ऑफ नवंबर का ही पूछा था. नाइस. ओके, बच गए भाई, बच गए. Leria company should account for the sale and leaseback as follows. De-recognize 18.92 underlying asset. 18.92 हमने कितना देखा? हमने 18 दिखाया था. ओके. Uh, recognize 30 million proceeds from sale. Recognize ROE of 16.4 million. Recognize lease liability of 26 million. Recognize profit on disposal from the underlying asset of 1.48. अच्छा सर, सबसे पहली बात तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये कैरिंग अमाउंट को हमने इतना चेंज क्यों किया है. सी हमें कैरिंग अमाउंट यहाँ पे 18 मिलियन ही दी गई थी. कैरिंग अमाउंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट 18 प्लस 2. ओ राइट राइट राइट. सी यहाँ पर हमने जो है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट 2 मिलियन विल बी स्पेंड टू इम्प्रूव द क्राउड बैरियर्स. एंड यहाँ पर ना देखो, हमने देखा था कि लेरिया हैज इनकरेक्टली ट्रीटेड दिस अमाउंट एज रिडक्शन इन द एसेट्स कैरिंग अमाउंट. तो ये जो 18 मिलियन है ना, इसके अंदर 2 मिलियन रिड्यूस होके आया हुआ होगा. तो अब हमें उस 18 मिलियन को सही से ट्रीट करना है सबसे पहले बात तो हम लोग उस 18 मिलियन में हमारे 2 मिलियन को ऐड बैक करेंगे. एक बार हमने उस चीज को ऐड बैक कर लिया, अभी हमें उस चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. और हमारे कितने साल का था वो एसेट, क्या हमें वो दिया गया था? फाइंड इट. हाँ. The stadium is being depreciated by 5% per annum using reducing balance method. अरे अगर इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ था रिड्यूसिंग बैलेंस का, तो वो ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, वो किसी ना किसी रीजन से दिया होगा एंड वी मिस्ड इट जेन्युइनली. तो ये देखना, पहला तो 1 मिलियन एंड देन यहाँ का चेक कर लेते हैं. 1 मिलियन एंड देन 1/12 किया इन्होंने बिकॉज 31st of November 16, वेर एज हाँ ईयर एंड था कितने का. सो ये मुझे आ गया 19 एंड देन 0.15 प्लस 1/12. कस्टम नहीं, जनरल. 18.92 आ गया. 18.92 आ गया. तो अब से सबसे पहले यहाँ पे स्टेडियम को है, यहाँ पर हमने ना, ये देखो स्टेडियम को 18 लिया था. मुझे यहाँ अपने को यहाँ पे 18.92 लेना चाहिए, क्योंकि अभी अपना कैरिंग अमाउंट चेंज हो गया. इन द फर्स्ट टाइम वी डिड नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट एंड दैट वाज द मिस्टेक. ठीक है. और यहाँ पर so now what would be the profit that has been earned? Now that would change, which is 1.48. तो हमारा जो 1.48 है, अभी वो आएगा एज प्रॉफिट. क्या यहाँ पर 1.48 आया था? हाँ, 1.48 का प्रॉफिट ये रहा. तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री वो सब चीजें सही थी, बट हमारे कैलकुलेशंस अंदर के गलत चले गए. इसलिए इफ यू सी, मैंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया पहले पूरा, एंड देन आई जम्प टू कैलकुलेशन, बिकॉज मुझे ये करना ज्यादा पसंद है कि पहले एक्सप्लेन कर दो, सो दैट अगर अपनी कैलकुलेशन में कुछ गलती होगी तो भी एक्सप्लेनेशन में कोई गलती नहीं होगी. Again, sorry कि that mistake happened from my end, but again, as I keep saying it in my disclaimer also, कि I am also a student, so sorry. आगे बढ़ते हैं. Discuss whether the amortization of the intangible assets relating to television program content rights by Leria company and by industry
are acceptable policies in accordance with IFRS standards. Whether amortization of intangible assets relating to the television program content rights by Leria Company and by the industry are acceptable policies in accordance with IFRS standards. ठीक है. Leria Company has its own subscription-based television station. Okay. As a result, it has material intangible assets which relate to the content rights associated with the television programs. The budgeted cost of production are based on the estimation on the estimated future revenues of television program. These costs of production are then capitalized as an intangible asset and called content rights. The directors of Leria company believe that the intellectual property in the content rights is consumed as consumer or as customers view the television programs. Consequently, Leria company currently amortizes the content rights based on estimated future revenues from the television program. For example, if a television program is expected to generate 8 million revenue in total, 4 million of that revenue is generated in the year one. Then the intangible asset will be amortized 50% in year one. However, the industry practice is to amortize the capitalized cost of the program less its recoverable amount over its remaining useful life. अच्छा, तो सबसे पहली बात तो intangible assets की बात की तो it is IAS 38 intangible assets. Now, what does IAS 38 intangible assets do is it follows a, a rebuttable presumption. Or in a rebuttable presumption, what they do is they say कि amortizing intangible assets on the basis of future revenues is inappropriate. Why do they say this? Because see, revenue is based on a variety of factors which are not even linked to that asset. Revenues are based on a variety of factors such as inflation. मतलब रेवेन्यूज को अफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि नॉट जस्ट कि मेरा प्रोडक्ट के वजह से एमोटाइज हो रहा है, बट ऑल्सो बिकॉज कि शायद मैं अच्छे तरीके से उस चीज को वो सेल कर पा रहा हूँ. आई एम एबल टू लाइक मेरी सेलिंग स्किल्स इतने ज्यादा बेहतर है कि मैंने इंटेंजिबल एसेट्स को ऐसे बेच दिया. तो इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू द एसेट्स इकोनॉमिक यूजफुल बेनिफिट्स, राइट? So, therefore, it is not appropriate to recognize revenue. Uh, Sorry, it is not appropriate to amortize on the basis of future revenue. However, there is one exception to it. Company can amortize on the basis of revenue only if they are able to establish or able to demonstrate कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारे एसेट के इकोनॉमिक लाइफ के साथ क्लोजली रिलेटेड है, या या एसेट के कॉस्ट के साथ क्लोजली रिलेटेड है. अगर ये कंपनी डिटरमाइन कर पाती है ना, देन एंड ओनली देन अ कंपनी इज एबल टू लाइक अलाउड टू amortize ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एस्टिमेटेड रेवेन्यूज. ऐसा है. The industry practice which they have said about is completely fair, it is completely nice, it is good. ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलने लायक. That is fair. एक बार कितने मार्क्स ले आए? इट वॉज फॉर ओके 12 मार्क्स लिए कंबाइन आया हुआ है. सो इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखने के लिए आई थिंक हम यही सब बोल सकते हैं कि इंटैंजिबल एसेट्स दैट आर इंटरनली जनरेटेड वगैरह की उसका वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल है. लेकिन अगर आप यूजफुल लाइफ की बात और जो डेवलपमेंट जो हम डेवलपमेंट करके एसेट प्रोड्यूस करते हैं उसका कॉस्ट हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देन जो यूजफुल लाइफ है वो it's quite subjective in nature and requires very huge estimations or very subjective estimations. ऐसा those estimations can be changed on the basis of prospectively कि अगर हम सोचते हैं कि एसेट की इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ 8 साल की है और उसकी 10 साल हो जाती है, तो on the basis of IS 8 we can also change that estimation prospectively. चेक करते हैं. काफी बड़ा आंसर लिखा है इन्होंने तो एज व्हाट वी हैव सेड, बट लेट्स चेक.
IS 38 sets out a rebuttable presumption that amortization based on revenue generated by an activity which includes use of intangible assets is not appropriate. This is because revenue is influenced by many factors that are not even linked to the asset's economic consumption, such as inflation. अच्छा बाय द वे किसी को ऐसा ऐसा लगेगा कि मैंने ये रट्टा मारा हुआ है द आंसर इज हाँ द आंसर इज यस बिकॉज मुझे ये चीज पढ़ पढ़ के याद हो गई है सो डोंट वरी अगर आप लोग को नहीं हुए अब तक. However, the presumption can be overcome when it can be demonstrated that revenue and consumption of the economic benefits of the asset are highly correlated. The intellectual property embodied in television programs will generate cash flows to the television channel subscription, and the estimated revenues from the television program determine the amount to be spent on producing television program. Therefore, in this case, revenue reflects a proxy for the pattern of consumption of the benefits received. Revenue and consumption of the economic benefits of the intangible asset seem highly correlated, and therefore a revenue-based amortization method seems appropriate. So, जो मैंने चीज एक्सप्लेन की थी इन्होंने इस चीज को इस पूरे सेट के साथ लिंक करने का ट्राई किया है. ठीक है. Industry practice method is also acceptable and conceptually sound as it is based on the analysis of the remaining useful life of the program and the recoverable amounts. Such an approach does not contradict IAS 38's prohibition on the revenue-based amortization because it is not based on direct matching of revenue and amortization. The useful life of the asset is required to be reassessed in accordance with IFRS standards at least at each financial year where this results in a change in estimate. This will be accounted for prospectively from the date of reassessment. ये मुझे याद नहीं था ये मैंने ऐसे ही अपने मन से बोला क्योंकि मुझे आंसर आंसर बड़ा करना था. IAS 38 also states that if a pattern of amortization cannot be measured reliably, a straight line method must be used. B. How to account for players' contracts, including contingent performance conditions, any impairment which might be required to these non-current assets, and whether a player can be considered as a single cash generating unit. Players' contract cost. Players' registration contract cost are shown as intangible assets and are highly recognized at the fair value of the consideration paid for their acquisition. However, subsequently, players' contracts are often renegotiated at the cost. Also, players' contracts may contain contingent performance conditions where individual players may be paid a bonus based on their success in their terms of goals scored or the success of their football team as a whole. These bonuses represent additional contract cost. For impairment purposes, Leria Company does not consider that it is possible to determine the value in use of an individual player unless the player were to suffer a career-threatening injury and cannot play in the team. Players only generate direct cash flows when they are sold to another football club. Hmm. यूजुअली क्या होता है जब हम सीजीयूज की बात करते हैं या हम इम्पेयरमेंट की बात करते हैं हम एसिड्स की बात करते हैं. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन जिसके परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी इम्पेयरमेंट या उसका सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट डिटरमाइन होता है. देखो जो बोनसेस पे करने की बात है इफ पॉसिबल उसको हमें कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह ही शो करना होगा. ठीक है. या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरह. Hmm. In financial liability, we are obliged to pay, but here we are not obliged to pay. So it will only be shown as a contingent liability. मतलब bonuses. Bonus तो हो गया. These bonuses represent additional contract cost. For impairment purposes, Leria company does not consider that it is possible to determine the fair value or the value in use of individual players unless the player were to suffer career threatening. I think the value in use can be determined because they can be sold to another club, right? So I think fair value in use can be determined.
And impairment of these players can take place if they go through injury, because actually, when does impairment take place? The when the carrying amount of the asset is lower than the value in use. So when they go through injury or career क्या था वो? Cannot play in the team. So I think these can be treated as impairment of assets. Uh, and impairment can take place. अभी single cash generating unit है कि नहीं वो determine करना है. See, the problem with this is players play in a team. So whether we should account it as corporate asset or not, that is the question. क्योंकि टीम जीतती है ना. अब एक लड़के के खराब होने से वैसे टीम हारती है ऐसा. So whether it should be treated as corporate asset or not, that is genuinely a question that I am facing. एक बार पढ़ लेता हूँ मैं. When a player's contract is signed, management should make an assessment of the likely outcome of performance conditions. Okay. Contingent consideration will be recognized in the player's initial registration costs if management believes the performance conditions will be met in line with the contractual terms. Periodic reassessment of the contingent consideration should be made. A contingent amount which the directors and of Leria Company believe will be payable should be included in the player's contract cost from the date management believes the performance conditions will be met. Any additional amounts of contingent consideration not included in the cost of the player's registration will be disclosed separately as a commitment. Amortization of the cost of the contract will be based upon the length of the player's contract. The cost associated with the renegotiation of playing contract should be added to the residual balance of the player's contract cost at the date of signing the contract extension. The revised carrying amount should be amortized over the remaining renegotiated contract length. When the player sustains a career-threatening injury and is removed from the playing team, then the carrying amount of the individual would be reassessed against the best estimate of the individual's fair value less cost to sell and impairment charge made in operating expenses reflecting any loss arising. So impairment तो होगा ही होगा. It is unlikely that an individual player can be a separate single cash generating unit. See, exactly, that's what I meant. As this is likely to be playing squad. Wow, okay. Also, it is difficult to determine the value in use of an individual player in isolation, as players cannot generate cash flows on their own unless via a sale. Exactly. So this basically becomes a corporate asset, right? क्योंकि क्या हो जाता है कि हम लोग एक टीम में खेलते हैं. So everyone sustains that benefit or everyone gets that benefit ऐसा. ठीक है. So thank you for watching.